Het is aangepast wegens COVID. Na al die jaren wil mensen samen met ons lopen, maar dit jaar niet. Maar jullie kunnen wel meerijden. En als jullie mee willen rijden met jullie voertuig, neemt u even contact met de heer Manoj Hernam. En आप लोगों के एक nummer मिली, zodat jullie mee kunnen rijden met uw auto. जितना ऑटो चलेगा praalwagenoptocht mee. Die auto's die heel mooi zijn geversierd. Ik wil nummer 1 Lele Manoj lage. जले सारी रात, दिया जले सारी रात. Very good. That's good. Yeah. Yeah. Right. Pele hele pulang tu 200 को शो कर ले गए फोन नंबर पहले 200 को पुला से सकाम ले गए तो काम करे अंदर बाल के बोला 200 को फिर पुला देता तो करता बोले रोनी बोले मिनो मांगो रो ये ट्राउसी हो Vermont kap mi na mahir kani na ngawiri mi mahir kani par. Everything good.
He's so check he's so. He's so. So, check in. आप सभी को शुरू से स्वागत है एंड सभी जो प्राल वाहन उपतोह में भाग जो है लेना चाहते हैं अपने मोटर गाड़ी में आप सभी चलाना चाहते हैं एंड मैदान जो है करना चाहते हैं लेट वेल आप सभी को एक नंबर जो है लेना है एंड नंबर जो है आप सभी को मिल सकता है मेरे हेर मनोज हरनाम voertuig krijgt het nummer, dames en heren, zodat सब कुछ जो है फ्लोट रहे। जब तू भी अपन ऑटो में बैठकर और प्राल वाहन में मैदान मांगे करे एंड अपने मोटर गाड़ी के साथ प्राल वाहन उपतोह में जो है भाग लेना चाहते हैं तो एक नंबर जो है आप सभी को ले लेना है मेरे हेर मनोज हरनाम एंड आप सभी को शुरू से स्वागत किया जा रहा है दाम से हेर Stichting SCRJ en SCRC Welzijn in samenwerking met de Stichting SCRJ Leiding 9A en Sportcomplex Quata आप सभी को जरूर से बहुत सारे बधाई शुभकामनाएं जो है पेश करते हैं एंड दिवाली के शुभकामनाएं जो है आप सभी को शुभ दिवाली आप सभी को जो है पेश किया जा रहा है आने वाले शनिवार 7 अगस्त को जबकि दिवाली है तो आप सभी को बहुत सारे बधाई एंड शुभकामनाएं जो है पेश है अभी कुछ देर में आदरणीय पंडित राकेश द्वारका जी एक पुष्पराग जो है करने वाले हैं उसके बाद de heer meester Kanhai secretaris van VHP buurtbewoner जो है en lid van de stichting भी है en उसके बाद देसी वानिका मevrouw हरी हीरा सिंह सीताल जी भी एक पुष्पराग जो है करने वाले हैं तो बस आप सभी देखते रहना कि किस तरह से प्रोग्राम जो है हम सभी आगे जारी करने वाले हैं en voor de duidelijkheid dames en heren wilt u ook meerijden met de praalwagen optocht neemt u een nummer bij de heer Harold Manoj Arnaam
बुद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कृष्णा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ नैना पेश कर सभी मजदूरगण स्टेफिंग के सभी महानुभाव और विशेष हम लोग के बीच में जनमाता डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हीरा सिंह सीता जी और उनके संसाथी सभी मिस्टर कन्हई जी और सभी महानुभाव भजन कीर्तन समाज और इस जुलूस में जितने लोग भाग लेंगे आप सभी को विशेष स्वागत धन्यवाद है। और आज इस महालक्ष्मी पर्व को उपलक्ष्य पर जहाँ पर आज से ही दिवाली शुरू हो है, धन्वंतरी पूजा, नरक चतुर्दशी, आज से धनतेरस, धन्वंतरी, कल नरक चतुर्दशी है, छोटी दिवाली, फिर महालक्ष्मी पूजन, दीपावली पर्व, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये पंच महापर्व हम लोग एक साथ मनाते हैं और आज से पर्व शुरू होते हैं। इसलिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये पर्व का यही महत्व है कि सभी एकता के सूत्र में बने। पंच हमारे यहाँ परमेश्वर भी होते हैं। आपके यहाँ कहा गया सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिलन रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक, तो 5 देव हमारे यहाँ विशेष है, उसमें से ये पंच महापर्व भी हम साथ मनाते हैं। और आज धन्वंतरी भगवान विष्णु का एक स्वरूप है जो प्रकट हुए समुद्र बंधन से और संसार को जो चिकित्सा है अल्ट्रासाउंड है, ठीक, वो सबसे बड़ा रहेगा जो हम लोगों के जितना भी वेदी से है वेदी का नहीं है वो हम लोग को भगवान धन्वंतरी की कृपा से प्राप्त हुआ है, जो आयुर्वेद का स्थापना भी किया है। और विशेष इस समय कोविड-19 के जो मामला चल रही है, हालांकि बहुत भगवान के प्रशस्त है एंड वो होपल या सब बीत जाए, दूर हो जाए ये बीमारी। हम लोग यही मिलकर प्रार्थना करते हैं। यहाँ आज समाज उतना विस्तार पूर्वक कार्यक्रम ना हो सके हैं, लेकिन तो भी पर यहाँ के जो 3 ग्रुप हैं, 3 समाज है, मिल करके और विचार किया कि कुछ ना कुछ तो एक प्राल वाखन ऐसे एक जुलूस निकाला जाए ताकि जनाए कि ना कुछ है नहीं, जब कुछ ना हो तब पता ना लगे कि दिवाली ही की का है। तो बहुत लंबी चौड़ी ना करते हुए दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप हर को देते हैं। आप जो यहाँ पर हैं या यूट्यूब, फेसबुक, जो घर पर इस कार्यक्रम को देखते हैं और दूरदर्शन के द्वारा जो देखते हैं, हर एक को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। मैया लक्ष्मी आशीर्वाद देवे, आपके घरों में सुख शांति आनंद खुशहाली हो और विशेष सभी को स्वतंत्र रहे, तंदुरुस्त रहे, यही प्रार्थना है। ओम लक्ष्मी करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम स्तोमा सद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायमृतम गमय। लक्ष्मी माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव मंगल। आदरणीय पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद संस्था की तरफ से। एंड हम सभी के साथ यहाँ पर भी है जरूर से मिस्टर कन्हई सेक्रेटरी van PHP, मिस्टर kort boodschap voor iedereen. MC bedankt, adanya Pandit Ji, Stichting Sociaal Cultureel Religieus, Leiding Mega A, Stichting Sociaal Cultureel en Religieus Jongerenwelzijn Wegnazie, bestuursleden, Bhajan Samaaj, en ieder aanwezig is. Ik heet u namens het bestuur van Stichting Wegnazie Welzijn van harte welkom. De pandit heeft net zojuist aangegeven belangrijkheid.
belangrijkheid van het Diwali-feest. Ik zal heel kort aangeven. Kort boodschap. Diwali-feest is het symbool van het licht in ons leven. Het symbool dat ons leven in een verlicht pad aangeeft, die zeker belangrijk is in ons leven. Diwali-feest vieren wij. Die zijn bij verontschuldiging. U weet, wanneer het geluid niet goed is, dan zit je helemaal overstuurd. Mag ik u van harte welkom heten namens het bestuur. Maar goed, de techniek die gaat ons ook soms in de steek. Maar goed, wij zijn hier. Het licht, ja, die over ons schijnt, is heel belangrijk. Het symboliseert, ja, de overwinning van het goede op het kwade. Het symboliseert de overwinning van wijsheid op onwetendheid. Het symboliseert van waarheid op onwaarheid. Wij mensen hebben dagelijks de zegen van Mahalakshmi nodig, het licht van Mahalakshmi nodig, om in ons leven dat te gebruiken, mee te nemen om ons leven op een juiste wijze, rechtvaardige wijze, met wijsheid, met liefde, met waarheid door te brengen. Mogen het licht van Lakshmi schijnen op de hele wereld, geheel Suriname, ja, dat wij het COVID-19 virus mogen overwinnen als mens. Mogen het licht van Lakshmi Ma schijnen in ons harten, zodat de overwinning plaatsvindt van de duisternis, dat wij als mens goed in ons leven, sterk in ons leven, in eenheid, de problemen van het land kunnen facen en door kunnen gaan met het leven. De overwinning van het goede op het kwade, mogen de zegen van Lakshmi Ma rusten op het totale samenleving van ons land. Geachte aanwezigen, deze nogmaals dank dat u de drukke tijd en periode die u meemaakt in uw werk, dagelijks leven, dat u hier bent. Nogmaals, welkom en heel hartelijk dank. Loop aan het dank. Meester Kanhaji. En इस तरह से मेजर कन्हैया जी एक छोटा सा बोस्टकाप जो दिए हुए हैं और nu हम जरूर से देसी वानिका mevrouw सुरक्षा हीरा सिंह सीताल जी को हम एंजॉय करना चाहते हैं छोटा बोस्टकाप के साथ. aanwezigen van die organisatie, meester Kanhai, iedereen die deelneemt, van harte goedenavond. Ik wil eigenlijk beginnen door waarmee Panditji was geëindigd. Sri Lakshmi Karotu Kalyanam, Auragya Sukh Sampadam, Mama Shatru Vinashaya, Deepa Jyotir Namostute. Dat heeft de pandit als laatste aangegeven. Maar wat betekent het? Als je heel veel jongeren hier, we onthouden altijd allerlei spreuken, gebeden, bhajans, maar we weten niet wat het betekent. Letterlijk betekent het, Sri Lakshmi ji, ik aanbid u. Ik aanbid u heel eerbiedig, omdat u over ons waakt. U zorgt voor ons welvaart, voor ons welzijn. U waakt tevens over al het kwade. U waakt over onze vijanden die op ons pad willen komen. U zorgt ervoor dat wij al het kwade uit de weg kunnen slaan. U zorgt ervoor dat we dus gezond en wel zijn. En daarom maken we een dia aan om u te representeren. Het licht, Lakshmi Mata. Toch, Panditji? Ja, dat is de betekenis van die spreuk zo net. En daarop aansluitend wil ik dus aangeven, laat dit licht dat altijd duisternis overtrekt,
altijd een leven zijn. Dit is eigenlijk een momentum waarbij we een evaluatie houden in ons leven. Van waarom was toen dat met me gebeurd en waarom gebeurt dit met mij? En dan ga je bij jezelf na, wat heb ik verkeerd gedaan? Denk je, ja, ik heb toen mijn duisternis uit het leven weggehaald. Door licht in mijn leven te brengen. Ik heb positiviteit in mijn leven gebracht. Ik heb negativiteit weggehaald. Laten we dat vasthouden. Laten we dat meenemen voor de rest van ons leven. Tegenwoordig zie je heel veel negativiteit. Mensen houden negativiteit vast. Men is een beetje van het positieve vergeten. Maar daarom is er duisternis. Als er geen duisternis was, kende men de waarde van licht niet. En vandaar dat we soms bepaalde dingen op onze pad krijgen. Zodat we kunnen weten van nee, dit moeten we goed doen en dit moeten we beter doen. Of dit moeten we beter aanpakken. Dus laat het licht altijd in ons leven zijn. Laat het positieve altijd in ons leven zijn. Ik wens u allen alvast een hele mooie Diwali toe. Shubh Diwali. En ik wens aan ieder en vooral de organisatie een geweldige praaloptocht toe. Dank u. Dank u wel, dank u wel. और इस तरह से देसी वालिका और सुरक्षा हीरा सिंह सीताल जी तो जरूर से अब समय जो है हो गया है यहाँ से निकलने के वास्ते तो सभी जो अपने मोटर गाड़ी में जो बैठे हुए हैं अगर आप सभी साथ में जाना चाहते हैं तो सीकर से आप सभी हम सभी के साथ चलिए एंड प्राल वाहन जो आज को पास जो है किया गया है व्हीकल्स को फिर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं जो है पेश किया जा रहा है। जय श्री राम। Zo, check, zo. Hey. Ja mensen, het is tijd om te vertrekken, dus... Hey, wat je zo check, alright, zo. Hey, zo check, zo Asman check. musicians! Jawel, Hey, Asman hey. musicians! Hey, wat je zo check, alright, zo. Hey, wat je. Hey, so check. Hey. Yes sir, alright. Hey. Hey, so check. Hey, what you, so check. Hey, right, so. What you, so check, आगे बढ़ो. Alright, so check, yes. Hey. Yes, sir. Alright. Hey, sir. Alright.
ga alvast, ik denk dat ik even naar die rotonde ga. Oké, dan pak ik eentje, dan ga ik naar huis. Oké, is goed. Ik ga ook even nog een paar voetjes maken. Ja. Maar gaan ze naar de rotonde, naar die kant gaan ze naar Olifant? Rotonde gaan ze rechts. Oh, oké. Commissaris weet en we gaan leiden, toch? Ja. Ja, Dan eentje pakken, dan misschien kom ik later hier. Oké. तेरे